Welcome to Back to Basics. Good morning. Can you say that what I said right now is a complete sentence? No. Then I hope that you must be knowing what the complete sentence is. Well, did you think that it is I wish you a good morning? Yes, then you are right. The complete sentence is I wish you a good morning. Dear students, when I say a sentence, there are always two parts of it, a subject and a predicate. What do you think what the subject is? Is it always a noun or a pronoun or both of them? If you want to know, then come along. Dear students, in my sessions of Back to Basics, you will be understanding the all rules of grammar on all the topics in a very comprehensible and simple way. And that too, we will be taking very practical examples that you are using in your everyday. So, today's topic is subject and predicate. And if you find that my sessions are actually very comprehensible, then please do share and subscribe. I have taken one example. We should profit by experience. As I told you, that any sentence has got two parts, a subject and a predicate. And dear students, that in the sixth standard and in the seventh standard, we are asked to separate or to find out subject and predicate in sentences. So, how to find them? Let's understand. Subject is the person or the thing who is being talked about. The subject is also the doer of an action, whereas a predicate is the one that is being talked about the subject. Means whatever you are talking about the subject will remain the predicate. So हमें सब्जेक्ट को पहचानने का क्या तरीका है कि हम देखें कि किसी सेंटेंस पे एक्शन को कौन कर रहा है या कौन काम को कर रहा है, डूअर कौन है, और हम दूसरा ये देखें कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. हम ये दो चीजें पहचान लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट कौन है. आओ इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. आई सेड वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस. हु शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस? वी. Who are we talking about? We are talking about we. So what is the subject of the sentence? The subject of the sentence is we, right? We is the subject and should profit by experience is the predicate. Here in this sentence, we saw कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आया और बाद में प्रेडिकेट. यूजुअली सेंटेंसेस में होता भी ऐसे ही है. जैसे अभी मैंने आपको एक ऑप्टेटिव एग्जांपल के थ्रू समझाया, आई विश यू अ गुड मॉर्निंग. हु इज द डूअर ऑफ एन एक्शन और हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? आई. आई इज द डूअर ऑफ एक्शन और एक्शन क्या हुआ? विश यू अ गुड मॉर्निंग. तो आई हो गया सब्जेक्ट और विश यू अ गुड मॉर्निंग हो गया प्रेडिकेट, राइट? लेकिन क्या ये जरूरी है कि हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा और प्रेडिकेट बाद में? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. जैसा कि आप यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में देख सकते हो, मैंने लिखा है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. तो चलिए पहले हम सब्जेक्ट निकालते हैं. रूल क्या था कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या कौन यहाँ पर डूअर है. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एडवर्सिटी के बारे में. एडवर्सिटी इज द सब्जेक्ट. Sweet are the uses of adversity. What are we talking about? We are talking about adversity. और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उसके uses जो है ना वो sweet है. तो ये क्या हो गया? ये हमारा predicate हो गया. तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा? हमने देखा कि सब्जेक्ट यहाँ पर predicate के बाद में आया है, राइट? तो predicate सेंटेंस में
पहले भी, सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है। अब एक और केस है, वो केस है इंपरेटिव सेंटेंसेस का। आपको याद होगा मैंने अपने पहले सेशन में आपसे पूछा था कि which sentence is as short as a single word, and I told you also that imperative sentences are as small as a word is. When I said run, you is implied. What I mean to say, you run. Similarly, when I say good morning, what I mean to say, I wish you a good morning, right? So in imperative sentences, you is usually implied, it is not written. So here I have taken two examples. Come here. प्लीज डू रिमेम्बर, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है, तो आई एम टेलिंग यू कि इस सेंटेंस में यू जो है ना वो इम्प्लाइड है। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें यू क्या है, इम्प्लाइड है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू। कौन यहां पर आए, यू, यानी यू हो गया सब्जेक्ट। और बाकी क्या बचा, बाकी बचा कम हियर, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, राइट। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में जिनमें भी यू इम्प्लाइड होता है उसमें आपको अपनी तरफ से सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या होगा, यू, और प्रेडिकेट हो जाएगा कम हियर। नाउ सेकंड सेंटेंस इज बी सीटेड प्लीज। अगेन ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है। याद कीजिए, इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इंस्ट्रक्शन, कमांड, रिक्वेस्ट की जाती है। इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है, तो यू यहां पर भी इंप्लाइड है, यू बी सीटेड प्लीज। तो सब्जेक्ट क्या होगा, यू, एंड प्रेडिकेट क्या होगा, बी सीटेड प्लीज, राइट। नाउ आई हैव टेकन अ क्लासरूम सिचुएशन फॉर यू चिल्ड्रन, और इसको आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं क्लासरूम सिचुएशन एक्चुअली क्या है। द क्लास टीचर एंटर्ड द क्लास। अगेन सब्जेक्ट कैसे निकालना है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लास टीचर के बारे में। हु इज द डूअर ऑफ एन एक्शन हियर, द क्लास टीचर। और वो क्या कर रही है, वो सब हो जाएगा प्रेडिकेट। तो एंटर्ड द क्लास क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या होता है, सेकेंड सेंटेंस में ऑल द चिल्ड्रन स्टूड अप एंड विश हर गुड मॉर्निंग। किसके बारे में बात हो रही है, डूअर ऑफ एक्शन कौन है, ऑल द चिल्ड्रन स्टूड अप एंड विश्ड हर गुड मॉर्निंग। ऑल द चिल्ड्रन, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट, इन्होंने एक्शन किया है, तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। अब बचा क्या, स्टूड अप एंड विश्ड हर गुड मॉर्निंग, राइट। नाउ लेट्स टेक अप नेक्स्ट सेंटेंस। द टीचर ऑल्सो विश्ड them good morning. Who is the doer of action, the teacher. Who is being talked about, the teacher. So the teacher will be subject, and predicate also wish them good morning. Now the next sentence is open your English grammar book on page number 10. First of all, you need to tell me which type of sentence is this. If you are guessing that it is an imperative sentence, then you are right. Open your English grammar book on page number 10 is an imperative sentence with you as an implied subject. So you will have to supply you to this sentence if you have to identify the subject. Who has to open the book? You. You open your English grammar book on page number 10. Correct? So you have to write in this sentence, you is the subject, and open your English grammar book on page number 10 is the predicate. Correct? Now, another sentence. Have you ever heard about subject and predicate?
Can you tell me what is the subject here? Here the subject is you. And you must be wondering, if you think about the order of subject, you must be wondering that here in the sentence, you or subject has come in between the sentence. राइट सो इट्स नॉट लाइक दैट कि सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है या सब्जेक्ट बाद में आता है. सब्जेक्ट कहीं पर भी आ सकता है. आपको सिर्फ ये रूल अप्लाई करके देखना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन डूअर है. राइट सो इस सेंटेंस में हैव यू एवर हर्ड अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में यू इज द सब्जेक्ट. और इसके बाकी क्या बचा, बाकी बच गया हैव एवर हर्ड अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये हमारे प्रेडिकेट हो गए. यू मस्ट बी नोटिसिंग कि मैंने जितना सिंपल और जितना प्रैक्टिकल हो सकता है उतने एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिए हैं. और मेरा इंटेंशन भी ये है बच्चों कि आप रटने की जगह समझने की कोशिश करो कि हम जो भी सेंटेंसेस एवरीडे यूज में बोलते हैं उनमें ग्रामर के रूल्स अप्लाई करो. अपने आप से पूछो कि इस सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए, टाइप क्या था, अगर एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे. देन द ग्रामर विल बी फन एंड इट विल कम आउट ऑफ क्लासरूम. राइट now let's take the other subject. What is a subject? It is an interrogative sentence. And what we are talking about? We are talking about subject. So subject is a subject, right? And the leftover thing is the predicate. What is or will be the predicate. Correct? The last example. Those who know will only raise hands. Right? So here, what is the subject? The subject is those. Who know. Those who know. किसके बारे में बात हो रही है? जिन लोगों को पता है उनके बारे में बात हो रही है. और क्या बात हो रही है कि उनको अपना हैंड रेस करना है. चिल्ड्रन प्लीज ध्यान रखिएगा, हमें किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को, नाउन प्रोनाउन को, वर्ब को अकेले नहीं लेना है. हमें ये समझना है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. इस सेंटेंस में हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको पता है. ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? उनके बारे में जिनको पता है. और क्या बात हो रही है कि उनको अपना हाथ खड़ा करना है. दे हैव टू रेज देयर हैंड्स. राइट सो for such interesting sessions in English, where we will be learning all the topics in very practical and lucid manner, do subscribe, share, and like my videos. Thank you and have a nice day.